students while we're going through the slides. So just a brief introduction about myself. I am Dr. Sonia. I am working at the Khan University in the Department of Community Health Sciences. I am an epidemiologist and biostatistician and also a dentist by training. So I won't be able to help you out much with like neurosurgical examples or something, but I'll try my best. So what we're going to be discussing today is bias and confounding. You can go over the objectives in your own time, but the three primary elements that we're going to discuss is assessing what bias is and what its role is in assessing study validity. We're also going to be studying some biases that are associated with study designs, ways to minimize bias, as well as understanding the role of confounders and how to report their presence, and also understand methods to control them. So moving forward, if I present this situation to someone, there's a question which says that obesity is leading to osteoarthritis. I conducted a study and I found out that there is a positive risk ratio that I found here, which says there's an association of 3.5. Like this is the magnitude of association. Can I confirm that this is accurate? Would someone answer? Like, is there a way to confirm that this is accurate? I know, so those students, but like still. Okay, I guess interaction is out of the question for now. So why is my cursor not moving forward? 1 second. So there are two ways to look at the situation, right? It can either be a true association, because obviously अगर हम दो variables के बीच में एक अपना relationship देखना चाह रहे हैं तो उसकी true association हमें पता चल सकती है. And the other would be the result is due to chance, bias, or confounding. All right, chance is a very simple word that most of us have heard. Basic English में भी हम बोलते हैं बहुत आराम से, but bias or confounding थोड़े से नए words हैं that we kind of have to be a little bit careful about. Does anyone know what generalizability is? Yeah, I know it's the weekend, लेकिन इतना मतलब सन्नाटा I did not expect that. So I would appreciate if some sort of like response came. Maybe some types of variable that can be applied across various patients, various types of patients, or various type of population. ठीक है, कभी generalizability का word सुना? Like, I mean, I'm sure वैसे English में सुना होगा, but like research में कभी सुना? नहीं, मतलब उसके मतलब स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह का अलग कॉन्सेप्ट है कि हम स्ट्रैटिफाई करते हैं. चले वो तो बहुत ही आगे की बात होगी ना, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स इसमें जा रहा है. चले कोई बात नहीं. What we can do is we can just go as we proceed. अच्छा, so generalizability का जो concept है, अब accuracy of estimate क्या होता है? Internal validity एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि हाँ, basically the purpose of that is कि we want to know how valid or true our findings are with reference to our source population. For example, I'm doing a study with MI patients, right? And I did a study to assess anxiety levels in MI patients. Now, the findings that I got, I need to make sure that those findings are valid and accurate for my source population, which are MI patients, right? So again, total MI patients और जो मेरा sample है, वो तो बिल्कुल my sample is going to be a smaller estimate, right? और MI patients तो हमारे generally आपको widespread मिलेंगे. So I want to make sure that the sample that I drew for my study should reflect the findings of like those that are outside my sample. मतलब सारे MI patients पे apply होना चाहिए. So internal validity क्या होती है? That when you are conducting your study, उसके अंदर you want to make sure how valid or true your findings are. And you want to make sure that those findings are applicable to people in the source population. Now there's a thing called external validity. External validity encompasses the concept of generalizability. What generalizability basically means is that your study findings should be applicable to people outside your source population and also like the general population. So for instance, if I'm doing a study among like undergraduate students and I take students from like, let's say, Dow, and मेरे डाउ के सैंपल में भी जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, can I make sure that they are applicable to those who are outside of Dow, right? So that is something that we have to take into consideration. And generalizability एक ऐसी चीज होती है जिसमें you want to make sure that
the results that you are getting are also applicable to students across all medical universities. तो मैं अगर एक सेंटर का डेटा लूंगी मुझे उससे नहीं पता चलेगा कि वो एप्लीकेबल है या नहीं है. हाँ, इफ वी टेक डेटा फ्रॉम मल्टीपल सेंटर्स तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा शायद रिजल्ट उसमें जनरलाइजेबल हो. इफ दैट मेक सेंस. इंटरनल वैलिडिटी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी. मतलब इंटरनल वैलिडिटी जब तक आपकी पूरी नहीं होगी तब तक आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी यू कैन नॉट असेस. यू कैन नॉट assume if your study results are generalizable if your study is not internally valid. All right, and I'll go into the specifics of what internal validation is, which is the focus of our session today. And then there's another concept which is study precision, which relates to the issue of reproducibility of results. So if we look at this image, if you see the first image, what do you guys see? Targets are all on the center and they're also very close to each other. Exactly. Now, if you move on to the second one, what do you see? What's the difference between the first two? They are not really close to the center, but they are really close to each other. They are Exactly. precise. Perfect. फिर next जो third वाला image है उसमें क्या नजर आ रहा है? कि हमारे पास yeah, compared to the second one, it's more to the center. But they are all like really away from each other. A bit spread out. And then for the final one, they're not even near the center, but they're also spread out. Right? Yes. So accuracy की जब बात करते हैं, accuracy का मतलब है कि how close are they to our like result, right? और precision क्या मतलब है? Reproducible. अगर मैं multiple points एक point पे डाल रही हूँ तो वो they're nearby, right? So I can say that my result has high precision, correct? Similarly, if we go to the second image है उसमें क्या है कि even though this is not exactly accurate, it is precise, right? So it's falling in that sort of same category, but it is not as spread out. The third and fourth images are a depiction of low precision, right? So basically जब अब आपके points are spread out तो उसमें क्या होता है कि आपके पास low precision होती है. The point of low precision is that you know that there is some inherent issue with your either your study methods or your results. So basically, like an issue all across, right? Now, let's start with bias. Bias ka matlab, bias is something that we hear day in and day out. The word bias means deviation from the truth, right? So this is the layman हमारी जो English की terminology होती है उसमें जब हम बात करते हैं तो ये होता है. Now, when we talk about epidemiological studies, there are two ways in which we can assess biases or errors. So errors की classification हमारी दो किस्म की होती है. One is a random error and the other is a systematic error. All right. So random error का मतलब क्या होता है? Random error का मतलब होता है that the error is due to chance. All right. And then systematic error जो होता है उसको हम bias कहते हैं. So again, research terminology and हमारी जो layman terminology होती है उसकी जो the understanding of the word bias is very different. Alright, so जब हमारी किसी study में systematic error होता है तो उसको हम bias कहते हैं और जब random error होता है तो उसको हम chance कहते हैं. Today we'll be discussing biases and confounding to be specific. Moving forward, if I talk about bias की definition क्या होती है? It's basically just like I said, it's a systematic error in the design, conduct or analysis of a study that results in an incorrect estimate. अब मेरे पास कोई मैंने अपने डिज़ाइन में कोई गलती की हो या मैंने अपने डेटा कलेक्शन प्रोसेस में कोई गलती की हो या मैंने अपनी एनालिसिस में कोई गलती की हो किसी भी स्टेप एट एनी स्टेप अलोंग द वे इन माय स्टडी इफ आई डू समथिंग दैट इज नॉट सपोज टू बी डन दिस वे तो उसमें क्या होता है देयर इज एन इनकरेक्ट एस्टिमेट आई मे थिंक एट दैट टाइम दैट दिस इज करेक्ट और आई मे नॉट रियलाइज इट बट दैट इज एसेंशियली व्हाट बायस मीन्स. Now, bias is something that you cannot really quantify or account for in the analysis phase of the study, right? So what you have to do is you must prevent it as much as possible. And how do you prevent that? Bias is something that you have to perceive from beforehand. आप design और execution of the study में जब देखते हैं, so basically bias क्या होती है? हम उसको quantify नहीं कर सकते. I cannot say that there is a 2% bias or a like 4 times bias or something like that. There's no number that I can attach to it, right? What I can do is that I can only assess for possible sources of bias and I'll go into those as I proceed. So bias का हमेशा एक inherent चीज जो आपने याद रखनी हो यही होती है that आपने instead of accounting for it for bias in the analysis you realize it and you acknowledge it in your design and execution phase.
Now the presence of bias must be recognized while interpreting the results of the studies. कभी आपने अगर रिसर्च पेपर पढ़ा हो और रिसर्च पेपर में कभी आप लिमिटेशन सेक्शन पे जाएं, if you go through those you will often see issues like something was हमारे कंट्रोल की सिलेक्शन में कोई मसला था, हमारा जो है पार्टिसिपेंट का फॉल आउट रेट बहुत ज़्यादा हो गया था, so things like that, all kinds of shortcomings that are recognized and highlighted. उसका पर्पस होता है कि आप बता दें उनको पहले खुद ही, because you need to acknowledge that as the researcher. There are two types of major biases. किसी को आइडिया है कौन सी किस्म की biases होती हैं? तो सुना होगा, आई एम श्योर, लाइक ऐसा नहीं होगा कि कभी ना सुनो. कोई आइडिया है किसी को? So what we can do is we can discuss that. So selection bias and information bias are the two primary branches of biases. All right. उनमें होता ये है कि फिर उसकी फिर further classifications होती हैं, and we'll go through them right now. So selection bias, what do you think the name implies? Like selection से आपको क्या समझ आता है कि selection में bias हो रही है? What do you think इसका मतलब है? Anyone? मतलब हम वही पेशेंट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करें जो मतलब जैसे हम रिजल्ट्स में भी जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से हम पेशेंट पॉपुलेशन सिलेक्ट करें. चलो क्लोज. सो बेसिकली जैसे आपने कहा कि आप जब अपने सैंपल सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें कोई सिस्टमैटिक अगर हमारा एरर हो जाए, सो दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज सिलेक्शन बायस. सो व्हेन यू सिलेक्ट योर स्टडी सब्जेक्ट्स ईदर बाय एक्सपोजर स्टेटस और डिजीज स्टेटस, अगर उसमें कोई एरर हो तो उसमें हमारी सिलेक्शन बायस आ जाती है. एंड व्हेन डज सिलेक्शन बायस हैपन? ऑब्वियसली एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेट कब होती है? जब हम डेटा कलेक्शन स्टार्ट करने जा रहे होते हैं, राइट? सो एंड ड्यूरिंग, एक तब होती है और दूसरा कब होती है? जब हमारी रिटेंशन का टाइम होता है. फॉर इंस्टेंस मैं कोहॉर्ट स्टडी करता हूँ, राइट? सो इन अ कोहॉर्ट स्टडी व्हाट डू वी डू? क्या करते हैं हम कोहॉर्ट स्टडी में? किसी को पता है? अच्छा, नहीं पता है मुझे भी. सो मतलब उसको मतलब वो हम एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स लेते हैं और उनको फॉलो करते हैं फॉर अ टाइम. बिल्कुल. तो हम जब फॉलो करते हैं तो फॉलो अप में यही होता है ना कि हमारे पास लॉस टू फॉलो अप भी होता है. सो ड्यूरिंग रिटेंशन भी हमारे पास सिलेक्शन बायस के इश्यूज आ सकते हैं. ऑलराइट. अच्छा. Selection bias is something that we cannot correct in the analysis. It is something that must be accounted for in your design and method phase, right? अब क्या होती है, प्रोजेक्ट आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, राइट? यू डोंट जस्ट लाइक गो इनटू योर पॉपुलेशन एंड जस्ट रैंडमली पिक आउट इंडिविजुअल्स. देयर इज अ वे टू गो अबाउट इट, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन योर स्टडी, जैसे अगर आपका स्टडी क्वेश्चन एक होता है, फॉर इंस्टेंस आई वांट टू डू अ स्टडी ऑन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर. अब मेरी जो है, आई हैव अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर पीपल हु आई विश टू एनरोल इन माय सेशंस, राइट? So what I'll do is I'll start off with a very basic and very simple selection criteria. कि मेरे कौन लोग हैं जिनको मुझे रिक्रूट करना है. मे बी आई वॉन्ट टू रिक्रूट स्मोकर्स, मे बी आई वॉन्ट टू रिक्रूट स्मोकर्स हु हैव बीन स्मोकिंग फॉर द पास्ट 5 years. To be more specific, I want to recruit smokers who have been smoking for the past 5 years and they're smoking at least 1 pack of cigarettes a day. Right? तो मैंने एक अपने क्राइटेरिया बना लिया. तो ये मेरे सब्जेक्ट का मैंने बना लिया. And then after that, what I'll do is कि I'll invite my eligible population for participation. Those who agree, again, I'll ask them to recruit in my project. और फिर मैं उसके बाद जो ना मानेंगे उनको हम exclude कर देंगे. What it does is, so अगर आपके जो participants and non-participants are differing in certain aspects, for instance, अगर कोई exposure या outcome में कोई issue है, it would introduce a selection bias, right? So, for instance, I have a smoker who has been smoking since 5 years, लेकिन बीच में उसने कोई छोड़ा था. Maybe they quit for a time being and they restarted. Maybe they did something else in the process. Maybe they switched to vaping. So basically, if there are certain differences between my participants and non-participants, then I need to make sure कि उनमें एक तो consistency हो, because if there isn't, there is going to be some sort of selection bias present. Now let's take an example. मेरे पास एक case control study है and I want to assess knee osteoarthritis and I want to assess its relation with obesity. So my cases are people who have knee osteoarthritis and then my controls are people who don't have knee osteoarthritis.
So my selection process is going to be, while selecting the cases, what I do is I'm going to just, for my cases who are people with knee osteoarthritis, I'm going to select people who have less physical activity. And then for controls, I'm going to select people who are physically active. So how do you think this can introduce bias? Like I pretty much conveniently just decided now. What do you think would be a possible reason why जिसमें इसमें bias आ सकता है? किसी को कोई idea है? गलत जवाब भी चलता है, it's not really a problem. The point is learning. Any idea? चलें. So for cases, I wanted someone, case की definition क्या होती है? Someone who already has a condition, right? I just assume that someone who is not as physically active has knee osteoarthritis. Similarly, for a control, someone who doesn't have osteoarthritis, I just conveniently select someone who is physically active, right? There is no way to assess कि ये कितना valid है और ये कितना इसमें कितना इसका सेंस बन रहा है, मतलब क्योंकि इसमें मसला आएगा ना, इसमें मैंने गलत तरीके से अपनी सिलेक्शन की है. Moving on to another example. I want to do a cross-section study. In that cross-section study, I want to assess the association between daily physical activity and blood pressure levels in a community. My outcome is hypertension, and my exposure is physical activity. So what I do is I go to a community health fair, जो कि किसी मेरे मोहल्ले के पार्क में हो रहा है, on 1 week, 1 day of the week, and I just recruit whoever I can find. I did the survey on site and the individuals present in the park during the health fair, and I just invited them to participate. How do you think there could be a bias in this selection process? There's no randomization of the subjects, and also the day and the time, the people coming to the park likely be fit. So I just very conveniently went at my own leisure ke okay fine, Saturdays work for me, I'll just go and I'll recruit anyone who is in that specific park only, right? So उसमें एक बात एलिमेंट आ गई कि आपने सिर्फ जो लोग बाकी दिनों पे आ रहे हैं आपने उनका भी तो कैचमेंट मिस करिए. दूसरा ये कि people who are in the park only. How many people actually come to the park regularly? And also, if I'm assessing daily physical exercise, is it necessary that someone is only coming to the park to exercise? Maybe they're very physically active at a gym. Maybe they're doing physical activity outside of that local vicinity, correct? So, उन सब elements में आपने उसको देखना पड़ता है. Now, moving forward, what are the types of selection bias? Okay, so this is important because why? Then you have to sort of like categorize what kind of bias applies to your study, right? So one is exclusion bias. Exclusion bias क्या होती है? When different eligibility criteria is applied to cases and controls. Okay, so अगर जैसे मेरे cases को exclude होने के लिए कुछ other चाहिए और जो मेरे जो उसका comparison group है, जो मेरा control है, उसके लिए अलग है. Volunteer और response bias. कभी सुना है volunteer bias का या response bias का? किसी ने भी? Has it ever like occurred to you guys kabhi bhi ke, you know, in such a situation? I mean, I'm sure all of you are coming from a hospital setting. So if you've ever had a chance to see like or be a part of any trial or any study that may have happened during your time in university? Yes. So kuch uska idea hota? So have you seen how like some people are always like willing to volunteer? And like जैसे हमारे कभी कभी स्टूडेंट्स थोड़े से बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, कभी हमारे कुछ पेशेंट्स बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, राइट? सो उसमें एक वॉलंटियर बायस आ जाता है. सो व्हाट वॉलंटियर बायस इज के पीपल हु आर वॉलंटियरिंग फ्रॉम दिस फॉर द टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ द स्टडी मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर नॉट, राइट? सो उसमें फिर क्या होता है कि आपकी स्टडी आउटकम्स इफेक्ट हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस जैसे लेट्स टेक द कोविड ट्रायल दैट हैपेंड. इफ यू रिकॉल एट द टाइम थोड़ा स्टिग्मा हमारा बहुत ज़्यादा था. And during that sort of COVID vaccine trial, a lot of doctors and health practitioners were encouraged to enroll, right? So उससे एक तो पर्पस ये भी था कि आप थोड़ा सा स्टिग्मा खत्म करें, लेकिन उसमें एक और भी चीज़ एक्नॉलेज की गई थी कि इसमें वॉलंटियर बायस था, right? So moving forward, I don't know why my laptop is being a bit slow today, but फिर एक होती है फॉलोअप बायस. फॉलोअप बायस आपको कहाँ से किन में हो सकती है? हमारे पास कोहॉर्ट स्टडीज में होती है और हमारे साथ ट्रायल्स में हो सकती है, राइट? सो फॉलोअप बायस का मतलब क्या हो गया? एज द नेम सजेस्ट,
people who you're supposed to keep track of, they are no longer available to you, या आपको respond नहीं कर रहे. जैसे अगर आपके 6 follow-ups हैं, 2 में available थे, 4 में available नहीं थे. So the proportion of subjects who are lost to follow-up differs between the exposed and unexposed groups. अगर आपके दोनों balanced हैं तो फिर भी आपके हालात थोड़े बेहतर हैं, but if it's not, then there are issues, right? So and if there are dropouts, तो उससे आपको क्या होती है, आपके analysis बहुत compromised हो जाता है. Then there's a special kind of bias which is called Bergsonian bias. Now, Bergsonian bias is something that you can only acknowledge when you're doing a study in a clinical or a hospital setting. And the reason why it's referred, if this is a bias, is because only a certain specific set of your population comes to the hospital, right? We cannot expect that जो इंसान आपके hospital में आ रहा है, आपके clinic में, is going to be at the same sort of level as someone who is in the community. Okay, so when your study is conducted in a hospital setting, it is important for you to acknowledge that there is a possibility of Bergsonian bias. For instance, अगर मैं स्मोकिंग और लंग कैंसर की एसोसिएशन चेक कर रही हूँ इन कंट्रोल्स, लेकिन मैंने केसेस तो अपने ले लिए, बट कंट्रोल्स आई टेक देम एज हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स फ्रॉम माय हॉस्पिटल. तो उसमें मेरी बायस आ गई बिकॉज माय एंटायर स्टडी सैंपल इज फ्रॉम द हॉस्पिटल. फिर एक होती है चीज हेल्दी वर्कर इफेक्ट. हेल्दी वर्कर इफेक्ट में क्या होता है, दैट इंडिविजुअल्स इन द वर्कफोर्स आर जनरली हेल्दियर देन दोज इन द जनरल पॉपुलेशन. सो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स appear healthier when compared to the general population. For instance, if we're comparing the occurrence of cardiovascular disease in manual laborers versus general population, right? क्यों? क्योंकि उनकी physical activity level ज़्यादा है, right? So based on that, we can just assess कि अच्छा इनमें जो है CVD की occurrence कम होगी as opposed to the general population. Why? Because they're not as active. यहाँ तक बात clear है? If anyone has any questions before we move on to information bias. कोई सवाल? I know some people joined in the middle, but no, I think we can move forward then. अच्छा, Thank so you. आगे फिर बात होती है, पहले हो गया selection bias, and then the next one is information bias. Information bias, as the name suggests, आपके पास एक incorrect assessment होती है of any measure, ठीक है, that's relevant to your study. Now that can be your exposure, that can be your outcome, or it can be both, right? It can be exposure and outcome both. This can be due to any errors in data collection. It can be due to any errors in your data collection tool. For instance, like if you're assessing weight and your scale is kharab, right? Or it could be due to any sort of issues. As for instance, कोई आपका एक measure है जिसकी specificity low है, जिसका so any sort of like shortcoming in that sort of process. So जब हम information bias की बात करते हैं, what are the sources of information bias? Now, possible sources, like I mentioned, इसमें measurement और classification के error हो सकते हैं. Data collection tool आपका valid नहीं है. Your lab records are inaccurate. Your records are inaccurate. Your instrument is not working properly. Respondent से भी आपको आ सकता है. Respondent से कैसे आ सकता है? Maybe they're not responding to you how they should be responding. Maybe they're not giving you the correct answer. Maybe they're not open about responses. फिर दूसरा क्या होता है कि आपके डेटा कलेक्टर्स का भी मसला हो सकता है. That could be due to the analysis or the person who is interpreting it as well. Now, when it comes to the respondent, how do you think the respondent is going to, be a source of bias? Maybe they're not able to understand. Maybe they're not able to recall. अगर आप किसी से जाके for instance पूछें कि आपने पिछले हफ्ते में क्या क्या खाना खाया, right? So उसमें inability to recall आ जाएगी. या उससे आप पहले जाके पूछें कि 5 साल पहले आपने कितने सिगरेट पिए थे, या जो भी, मतलब, so recall is a very important issue that always results in some sort of problem. Some of them are just unwilling to disclose, which is something we have to deal with day in and day out, even as practitioners and not just researchers. हम कभी कभी जब अपने पेशेंट से कोई सवाल पूछते हैं, they're being extremely confidential about it, so that can also result in information bias. फिर बात आती है कि how your questions are being phrased. आपके data collection tools हो गए, आपके respondents हो गए, आपके the people involved. Another thing that often people ignore is how complex is the language that you're using to communicate. For instance, आप किसी layman से बात कर रहे हैं, and the layman is someone who is not very educated. If you go to that person and if you start talking in scientific terms, आप उसको बोलें sarcoidosis, उसको बोलें आप myocardial infarction, do you think that person is going to understand what you're trying to say? No, right? So what you have to do is you want to make sure that you're communicating in a way that is understandable to them, correct? So that is also another way of introducing bias in your sample.
अब types of information bias पे आते हैं. Types of information bias में we have something called recall bias, which like I mentioned, someone might remember something differently as opposed to someone. जैसे हमारा एक कोई केस है, मुझे जो है कोई हेल्थ कंडीशन है, and obviously I'm going to be in more control of that sort of information as opposed to someone जिसको नहीं है. It's as simple as that. If I take an example, if a mother has a child with spina bifida, she is more likely to remember her child's history and his जो भी उसकी set of exposures रहा है, as compared to a mother जिसका बच्चा हमेशा से healthy रहा है. Correct? फिर बात आती है सर्वेलेंस बायस की. सर्वेलेंस बायस क्या होती है? Basically, people with a known exposure or outcome may be assessed or evaluated. I have a community which is near like a hotspot की, मतलब वहाँ पे एक फ्रेश वाटर रेजर्वायर है, तो वहाँ पे जो है डेंगू और मलेरिया के केसेस सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं. तो आई नो कि वहाँ पे हमेशा एक केसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहती है. तो नॉन एक्सपोजर हमारा ग्रुप है, तो उसको हम वो कहते हैं. अब फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो इसमें क्या बात हो रही है? इन्वेस्टिगेटर में प्रोब वुमेन विदाउट हिप फ्रैक्चर्स मोर क्लोजली अबाउट consumption of vitamin D supplements then the index series more closely. अब for instance मुझे पता है कि किसी का अगर fracture हुआ है, now this is something that is going to be like on my part, right? कि I might ask that person again and again कि आपने जो है vitamin D supplement लिया था नहीं लिया था. Why? Because in the back of my mind I know for a fact that maybe they are deficient. That is why they have a hip fracture. Correct? Similarly, so someone who may be more deficient but they do not have a fracture, chances are I will not question them as incessantly as I would this group. Does that make sense? फिर एक बात आती है wish bias की. Wish bias क्या होती है? It's introduced by the subjects while reporting the exposures. So if I'm responding to someone who is asking me, मैं मतलब मेरे पास एक researcher आया कुछ पूछने के लिए और मैं उनको जवाब दे रही हूँ, और मैं जो हूँ अपनी मर्जी से अपने जवाब दे रही हूँ, तो उसके अंदर थोड़े से wish bias के elements आ जाते हैं. फिर एक होती है फ्रॉम surrogate interview. अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक कोई इंसान आता है जिसको मे बी लैंग्वेज बैरियर्स हैं, मे बी वो थोड़ा कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड है. उनके साथ एक हमेशा अटेंडेंट होता है. जो वो अटेंडेंट होता है, देर ऑफन रिस्पॉन्डिंग ऑन देयर बिहाफ, राइट? सो दैट सरोगेट जो उनके बिहाफ पे जवाब दे रहा है, उसके और जो पर्सन जो हमारा जो सब्जेक्ट है उससे उसकी इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करने में फ़र्क होता है या नहीं होता है? होता है ना या नहीं होता? व्हाट डू यू गाइस थिंक? आई थिंक सब सो गए. खैर एनीवे, सो जब आपका कोई फैमिली मेंबर या आपका कोई अटेंडेंट या कोई भी अगर आपका साथ जो कि इन प्लेस ऑफ समवन कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसमें भी एक फर्क आता है और उसमें भी एक बायस आता है. फॉर इंस्टेंस देयर इज अ पर्सन हु हैज पास्ड अवे, और देयर समवन जिसका कोई रिलेटिव है जो कि इज अनेबल टू स्पीक, किसी को पैरालिसिस हुआ है, तो उसके इंटरव्यू देने में और उसका जो मेन सब्जेक्ट इंटरव्यू देने में भी बायस आ सकता है. एंड देन फाइनली वी हैव द हॉथॉर्न इफेक्ट. हॉथॉर्न इफेक्ट एक थोड़ा यूनिक किस्म का बायस है. उसमें क्या होता है दैट people who know that they're being observed, they behave differently under observation. For instance, if I am in the clinic and a researcher approaches me and they say कि oh अच्छा, so you know we want to do this study and हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छे मतलब lifestyle का heart health पे क्या होता है वो होता है. I may give you a response that may be favorable to you. I may act differently. I may, you know, as a respondent, मेरे behavior में अगर कोई फर्क आ रहा है, because I know for a fact कि आप जो हैं मुझे observe कर रहे हैं, so that means that there is something called Hawthorne effect, and that's something you should acknowledge. अब bias की assessment हम कैसे करते हैं और मतलब उसकी ज़रूरत भी क्या है, right? तो सीधी बात है that bias assessment का कोई simple formula नहीं है. But the easiest way to go about it is that आपने तीन उसके aspects को हमेशा consider करना है. When you're conducting a research study, there are three elements that you need to look for all the time. One, how are your subjects selected? Two, how is the response rates? Because responders और non-responders में भी फर्क होता है. And तीसरा, how accurately were the outcome and exposure assessed? Right?
So if you read the first question will allow you to assess अगर इसमें selection bias है. For the second question, उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें information bias के कोई elements हैं या नहीं है. And the third one is also relevant to information bias because इसमें outcome and exposure assessment की बात हो रही है. Now how can you prevent bias? हमने assess कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया. इसके कुछ तरीकेकार हैं. पहली बात है, we want to enroll people who are motivated. Obviously, we don't want to. पहली want to क्या? We cannot enroll people against their will. We want to make sure that they're doing मतलब वो fully informed consent के साथ उसको they agree to be a part of your paper. Here you want to employ subjects who are easy to track. पता चला you recruit someone who traveled all the way from, let's say, Afghanistan. वो वहाँ के पता नहीं किधर किसी शहर में भी नहीं रहते, कहीं किसी रूरल सेटिंग में वहाँ रहते हैं. So would you ideally want to recruit someone like that? No, especially अगर long term आपका follow up है. पता चला वो शहर से बाहर गया और आपका contact ही cut off हो गया. You want to make questionnaires that are easy to complete and also easy to understand. You want to make sure that your participants are interested. अक्सर होते हैं कि हमारे questionnaires, I'm sure all of us have filled them at any point in time. हमें Google Forms ही आते ही रहते हैं. तो उनका purpose क्या होता है? You want to make sure. तो अक्सर होता है ना कि आप एक form fill करे जा रहे हैं and you're just like, why is this not ending? This is so boring. I don't want to do this. When you are collecting data, you want to make sure that you maintain the interest of the participants, right? You want to make sure that phrasing आसान है. उसको आप ज़्यादा काम मत दें कि उसको लगे कि नहीं, मतलब एक तो मैं आपको जवाब भी दे रहा हूँ और फिर मतलब आप काम भी ले रहे हैं. मतलब you don't want to make them feel like this is a burden. फिर you want to use disease controls for reducing recall bias because this is for maybe case control studies or cross-section, comparative cross-section studies. Then we're talking about assessing past exposures from biomarkers. This is a possibility. Again, some of these are very subjective, some of these are very general. You want to use precise operational definitions of variables. आपने अक्सर देखा होगा कि हर पेपर में या किसी प्रोटोकॉल अगर आपने देखा हो, they always stress on why operational definitions are important. The definition, as basic as it may seem, is the defining factor, right? As the name suggests. आपका entire जो study का एक वो basis होता है, that always revolves around how you define your cases and your controls and how you define your exposure. If that is incorrectly assessed, there is automatically a bias present. You want to make sure that your data collectors are trained. फिर आपने जो है एक masking process अगर आप कर सकते हैं तो आप वो भी डालें. Masking का किसी को idea है what masking is? कभी सुना है masking, blinding? या जो मतलब जो पेशेंट का डेटा है वो जो है जो उसको एनालाइज करेगा उसको पता ना हो कि वो कौन सा पेशेंट है, उसकी आईडी पता ना हो, उसका नाम पता ना हो. So that's close, I would say. So blinding के भी बहुत सारे हमारे steps होते हैं. अब एक होता है process जिसमें हमारा patient blinded होता है, एक में होता है कि patient और doctor दोनों blinded होता है. तो अक्सर होता है कि जब हम data collection करते हैं ना तो कभी कभार हमें data collectors को भी blind करना होता है. उससे क्या होता है कि data collector को पता नहीं है कि वो केस से बात कर रहे हैं, कंट्रोल से बात कर रहे हैं, राइट? अब जैसे मुझे पता है कि किसी को डिजीज है तो चांसेस आर कि आई वुड बी मोर परसिस्टेंट विद क्वेश्चंस. कोई अगर मुझे पता है कि उसको लंग कैंसर है, मैं उसके पीछे पढ़ूंगी कि मुझे बताओ तुम्हारी स्मोकिंग हिस्ट्री क्या थी. अगर तुम सिगरेट नहीं पीते थे तो तुम हुक्का पीते थे, तुम अगर हुक्का नहीं पीते थे तो तुम वेपिंग करते थे, समथिंग, राइट? बैक ऑफ द माइंड आई विल बी थिंकिंग दैट देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई दिस पर्सन हैज इट, राइट? सिमिलरली अब मुझे अगर नहीं पता कि इसको कैंसर है या नहीं है, अगेन आई वुड जस्ट फॉलो द क्वेश्चंस दैट आर प्रोवाइडेड टू मी. इट्स एज सिंपल एज दैट. Another thing that we can do is when it comes to loss to follow up कि जैसे अगर हमारे पास cohort है, RCTs है और हमें इंश्योर करना है कि हर कुछ अरसे बाद हमारे साथ पेशेंट जो है फॉलो अप करे, we have to do certain things that will minimize follow up. Maybe have like a test schedule, कि कोई ब्लड टेस्ट है या कुछ भी है, आप उनको इंसेंटिव्स ऐसे दें कि वो आए. चलिए, this was bias. कोई सवाल यहाँ तक, कोई confusion? अगर है so then we can move on to confounding. No, thank you. Okay, so confounding पे आते हैं. confounding क्या होती है? confounding का किसी को वैसे आइडिया है, कोई बैकग्राउंड? Confounder is something जो common होता है cause और effect दोनों में. ठीक है, common मतलब like what do you mean by common?
as in which can affect the results of the outcomes. Okay, चलो हाँ close. किसी और के पास अगर I'm assuming नहीं है, so let's just like get into it because I don't think that we're a bit short on time. कोई बात नहीं, let's try. अच्छा, so unlike bias, confounding जो है, it's introduced by the investigator and the study participants. Bias is a methodological thing that may be due to multiple things that we discussed. Confounding is because of जो bias हमारी होती है वो हमारे investigator introduce करता है, study participants introduce करते हैं, हमारे processes introduce करते हैं. Confounding is primarily due to the relationship between the exposures and जो हमारे variables important हैं. Correct? अब यहाँ पे अगर it's basically what it is कि आपका एक effect mix हो जाता है, right? So your true association is distorted by the observed association. For instance, अगर मेरा जो effect बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, maybe एक third variable की वजह से वो थोड़ा subdue हो जाए. Alright? Now, if you take a look at this image, sorry. So there's an independent variable, there's a dependent variable, and there's a confounding. कोई बता सकता है कि independent dependent में फर्क क्या होता है? किसी को आइडिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? As the name suggests, dependent is the variable that depends on some other factor. However, the independent one is itself the factor. So basically like you suggested कि डिपेंडेंट का मतलब वही हो ना जिसके ऊपर किसी और की चीज पर डिपेंड करता है, तो मतलब ये आपका आउटकम हुआ, राइट? सो लाइक इट कुड बी योर, यू कैन आल्सो कॉल इट योर इफेक्ट, योर आउटकम, या जो भी. और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इन योर कॉमन जो हमारी एक लैंग्वेज होती है उसमें क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर हो गया. ओके, कुड बी रिस्क फैक्टर, कुड बी प्रिवेंटिव फैक्टर. और कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ थर्ड वेरिएबल, और उसका रोल क्या होता है कि जो हमारे कॉज और इफेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना उसको डिस्टॉर्ट करता है ये. ओके, इट मे बी, अब ये जो है ना ये प्रोटेक्टिव भी हो सकता है, ये रिस्क फैक्टर भी हो सकता है, बट योर कंफाउंडर कैन डिस्टॉर्ट दैट कि उसकी ट्रू एसोसिएशन क्या है. And it is the alternate explanation for the observed association between an exposure and disease. Now let's take this example for instance. Our independent variable is alcohol and our dependent variable is heart disease. Matlab heart disease is our outcome and our exposure is alcohol. And tobacco smoking is a confounder. Now how do I know if tobacco smoking is going to be a confounder? मतलब do you think मतलब मैं ऐसे ही बस बोल दूं कि कोई भी चीज confounder है? What do you guys think? Like confounder assessment का क्या होता है? There's always some kind of association between the cause and effect when it comes to confounder, because in this case, people who drink alcohol are more probable to be smoking as well. So that is why, since heart disease आ रही है alcoholics में, तो और वो tobacco smoke भी करते हैं, तो that affected the effect, मतलब the results. हाँ, close, very close. So let's simplify it further. There are three criteria for confounding. अगर आपने एक study करनी है and you have a bunch of variables and you want to identify which one is the confounder, तीन उसके criteria होना चाहिए. पहली बात, जो आपका confounding variable है, it should be associated with your independent variable. Independent variable मतलब आपका exposure या preventive या risk factor. Alright? दूसरी चीज होती है that it should be associated with your dependent variable. मतलब tobacco smoking in this case should be related to alcohol smoking also, and it should also be related to heart disease. ठीक है, यहाँ तक ये आपके दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए. And the third and the most important criteria is that it should not be the result of basically X to Y. All right. Tobacco smoking does not lie in the causal pathway of alcohol drinking leading to heart disease. Does that make sense? Yes. हर तीन क्राइटेरिया आपने ये जो अप्लाई करना होता है. इफ these three criteria are being fulfilled, then only can you say that a variable is a confounder. Otherwise it is not a confounder. इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया ना फिल होना तो हम उसको confounder नहीं कह सकते. हमारे यहाँ बहुत लूजली इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, बट दैट इज वाई यू शुड लर्न कि इन दोनों में फर्क क्या होना चाहिए. अब हम पता कैसे करते हैं कि कंफाउंडर सेलेक्ट कैसे होता है? किसी को कोई आइडिया हाउ डू यू थिंक यू कैन सेलेक्ट अ कंफाउंडर? लाइक आई एम जस्ट डूइंग अ स्टडी, मैं बहुत सारे वेरिएबल्स का डेटा ले रही हूँ, इनमें से मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि कौन सा जो है मेरा कंफाउंडर?
रैंडमली गैस गलत भी हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। आपको एग्जांपल दे सकती हूँ जिसमें से हम पिक कर सकें? चलो let's see, we want to assess the anxiety levels in someone who has hypertension। ठीक है, आपका एक्सपोजर हाइपरटेंशन है और आपका आउटकम एंजाइटी है। अब मैंने बहुत सारा डेटा लिया अपने पेशेंट से, मैंने सब कुछ पूछा, वो जो जनरल हम चीजें पूछते हैं, एज, जेंडर, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ पूछा। अब उनमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी कि इनमें से कौन सा जो है कंफाउंडर हो सकता है? गिव हम लोग जैसे आपने बताया कि वी हैव टू हैव 3 क्राइटेरियाज। वो तो चलो आगे की बात है, ठीक है ना, वो मेरी कंफर्मेशन है। बट मैं किसी को आइडेंटिफाई कैसे करूं कि ये पॉसिबली कंफाउंडर हो सकता है? सारे तो नहीं हो सकते ना, राइट? कुछ को मैं हैंड पे क्यों करूंगी? क्यों? बिकॉज उससे मेरी आसानी होगी, राइट? सो यू हैव टू रिपोर्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पॉसिबल कंफाउंडर्स। अब एक चीज होती है ए प्रायोरी कंफाउंडर्स और दूसरी होती है ए पोस्टीरियोरी कंफाउंडर्स। प्रायोरी का मतलब आपको पहले से पता है, ओके? और वो हमें पहले कैसे पता है कि कोई भी चीज किसी चीज का अगर रिस्क फैक्टर है। अब फॉर इंस्टेंस एंजाइटी और एमआई की, अगर एंजाइटी और हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें हम एज ले सकते हैं एज अ कंफाउंडर। Think about it. Is age related to anxiety? नो। Is age related to hypertension? Is यस। age related to hypertension? है ना? It is, right? But is age the reason why someone is like, मतलब वो हाइपरटेंशन से अगर एंजाइटी तक वो जो हमारा कॉजल पाथवे बन रहा है, उसमें एज का कोई लेना देना है? नहीं। नहीं है ना। तो हमारे दो क्राइटेरिया, अब देखो, देयर माइट बी सम लिटरेचर that may suggest that age is related to anxiety, right? So we want to do a very thorough literature search। जो हम इंट्रोडक्शन सेक्शन लिखते हैं उसमें यही होता है ना कि हमारे पास एक लिटरेचर का पूरा एक वो बैकग्राउंड क्यों करते हैं? वी वांट टू मेक श्योर दैट वी हैव ऑल द रेलेवेंट फैक्टर्स दैट वी कैन फाइंड। अब इस सिचुएशन में मे बी एज इज नॉट अ फैक्टर। नाउ लेट्स टेक जेंडर इनटू कंसिडरेशन। इज जेंडर रिलेटेड टू एंजाइटी? यस। हाँ, there are a lot of studies that have reported it, right? Similarly, is gender associated with hypertension? यस। It is, right? But gender does not lie in the causal pathway. Then I can definitely say that gender is a possible confounder in this situation. ठीक है, ओ। बात समझ आ रही है? यस यस। ठीक है। सो ए प्रायोरी कंफाउंडर्स आपके कौन से होते हैं? जिनका आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, और वो आपको प्रीवियस नॉलेज कैसे मिलती है? लिटरेचर सर्चिंग से मिलती है। और वो ओके। वाली जो आपके प्रीवियसली आइडेंटिफाइड होते हैं, यू पुट देम इन योर मेथड सेक्शन। जब आप अपना प्रोटोकॉल लिखते हैं, जब आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट लिखते होते हैं ना, उसके मेथड्स में आप पहले से आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इन वेरिएबल्स को हम पोटेंशियल कंफाउंडर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड वी विल टेस्ट फॉर देम लेटर। ओके, ये हो गए आपके ए प्रायोरी। अब बात आती है ए पोस्टीरियोरी कंफाउंडर्स की। मतलब ये वो कंफाउंडर्स हैं जिनका हमें पहले नहीं पता था, बट हम जब हमारा डेटा आ गया और जब हमने टेस्ट किया तब हमें पता चल रहा है कि ओ देयर इज अ पॉसिबल कंफाउंडिंग रिलेशनशिप हियर। ओके, और हम उनमें क्या करते हैं कि उनको फिर रिजल्ट्स में रिपोर्ट करते हैं। ऑलराइट, a priori confounders are again are easier to find because you have a lot of literature available for them. A posteriori is relatively more advanced because उसमें फिर आपकी analysis वगैरह involved होती है, and you want to make sure कि आप उसमें confounding के लिए assessment कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। फिर बात आती है assessment for the presence of confounding। ये थोड़ा सा technical है, but I'm sure when you guys read it once or twice, you guys will have an understanding। सो बेसिकली जब हम एनालिसिस करते हैं, एक होता है क्रूड एस्टिमेट और एक होता है एडजस्टेड एस्टिमेट। क्रूड एस्टिमेट क्या होता है? मतलब कि फॉर इंस्टेंस आई टेक वन वेरिएबल विच इज लाइक आई सेड विद द प्रीवियस एग्जांपल, हाइपरटेंशन और एंजाइटी ले लेते हैं। हाइपरटेंशन और एंजाइटी का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो मेरा क्रूड एस्टिमेट। बट if I take the relationship of hypertension and anxiety with something like the participant's age, with their socioeconomic status, with their level of education, with their medical history, तो वो मेरा adjusted estimate है। Okay? Adjusted estimate क्या मतलब? मेरे पास all other factors are also taken into consideration। Crude estimate क्या होता है? दोनों का बिल्कुल direct association, and adjusted estimate क्या होता है? दोनों का taking all other confounders and every other variable into consideration।
सो आपको पता कैसे चलेगा कंफाउंडिंग प्रेजेंट है? देयर विल बी अ डिफरेंस इन योर क्रूड एंड एडजस्टेड एस्टिमेट. ओके, सो इफ यू नोटिस लाइक अगर आपने स्पेसिफिकली उसके अंदर कंफाउंडिंग के लिए असेसमेंट की है एंड इफ यू नोटिस दैट योर एडजस्टेड एंड क्रूड ORs आर डिफरेंट, then you can assess, you can conclude that some variable is a confounder. In this case, यहाँ पे मैंने example दी हुई है एज की confounding on the case of smoking and myocardial infarction. अब इन्होंने पहले से assessment की होगी कि smoking का जो है एज से लेना देना है और smoking का एज का myocardial infarction से भी लेना देना है. बट एज की वजह से स्मोकिंग और myocardial infarction का रिलेशनशिप कॉजल पाथवे में नहीं आ रहा. सो दे डिड दैट प्रायर असेसमेंट और फिर इन्होंने इसको टेस्ट किया तो एडजस्टेड इनका OR आ रहा था 1 और क्रूड OR आ रहा था इनका 1.95. तो उसके बेसिस पे दे डिसाइडेड दैट एज इज अ कंफाउंडर. अच्छा, अब कंफाउंडर सिर्फ होता तो नहीं, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है. कंफाउंडिंग आपकी थोड़ी कम भी हो सकती है, आपकी ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मॉडरेट भी हो सकती है. सो आपका जो उसका इफेक्ट आ रहा है डिपेंड्स ऑन द associations between your exposure outcome and confounder. फॉर इंस्टेंस अगर मेरा हाइपरटेंशन और अपने एंजाइटी का ही जो एसोसिएशन है बहुत वीक आई है, मतलब 1.2 1.3 करके कुछ आ रही है, एंड इफ आई कंपेयर दैट टू लाइक एन एसोसिएशन लाइक OR और समथिंग ऑफ लाइक 6 और 7, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी, राइट? उसमें मैग्नीट्यूड थोड़ा मेरा ज़्यादा है. दूसरी इसमें चीज़ क्या होती है, पुट्स द ऑब्जर्व्ड एसोसिएशन अवे फ्रॉम द ट्रू एसोसिएशन. जब आपकी कंफाउंडिंग होती है ना, तो इससे क्या होता है, आपके रिजल्ट्स ओवर एस्टिमेट भी हो सकते हैं, अंडर एस्टिमेट भी हो सकते हैं और कभी कभार उनकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है. सो पॉजिटिव कंफाउंडिंग में क्या होता है, ट्रू एसोसिएशन आपकी एग्जैजरेट हो जाती है, योर क्रूड एस्टिमेट्स आर हायर देन योर एडजस्टेड एस्टिमेट्स. एंड नेगेटिव कंफाउंडिंग, there is underestimation of your true association and your crude estimates are lesser than your adjusted estimates. अब कंट्रोल कैसे करते हैं? कंफाउंडिंग कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं. एक चीज होती है when you control it in your design phase and the next one is when you control it in your analysis phase. डिजाइन फेज मतलब जब आप अपनी स्टडी प्लान कर रहे होते हैं, तो उसमें आपके पास 3 तरीके होते हैं. पहली होती है मैचिंग. मैचिंग में क्या होता है कि आप केसेस और कंट्रोल्स को किसी वेरिएबल के बेसिस पे मैच कर दें. फॉर इंस्टेंस मैंने एज पे मैच कर दिया कि मेरा अगर एक केस है वो 22 साल का है तो मेरा कंट्रोल भी 22 साल का है. फिर आ गई बात रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, किसी कैटेगरी या किसी कंफाउंडिंग फैक्टर के बेसिस पे मैंने रिस्ट्रिक्शन कर दी कि इसके हिसाब से ही मैं इसको लेके चलूंगी. Restriction is a bit complex. It's a lot like matching, so I won't go into the details of it. But that is also another process. फिर तीसरी चीज एक होती है randomization. Randomization क्या होती है कि random allocation कर दी कि I don't know कि कौन सा सब्जेक्ट जो है ट्रीटमेंट आर्म में जा रहा है, कौन सा जा रहा है प्लेसिबो आर्म. ओके, अब फिर जो होती है दूसरी किस्म की, दैट इज द एनालिसिस फेज. ये होती है जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, आपका डेटा आ गया है. नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग इन द एनालिसिस. एक तरीका होता है स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, आपने एसोसिएशन ऑफ इंटरेस्ट इन ईच स्ट्रैटम ऑफ द कंफाउंडिंग फैक्टर देख लिया. स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, वेटेड एवरेज आपने निकाल लिया. और एडजस्टमेंट क्या होती है हमारी मल्टीवेरिएबल एनालिसिस. उसमें जैसे मैंने बताया था ना, क्रूड एस्टिमेट और एडजस्टेड एस्टिमेट क्या होता है, तो उन दोनों में we that is what we basically refer to as adjustment. These are a bit complex words, but again, at least as long as you have an idea of them, you should be good to go. Failure to take confounding into account is an error and can bias your results. Now, in summary, जब आप कोई भी दो variables के बीच में association देख रहे होते हैं, if you are able to rule out the effect of chance, bias or confounding, you can say that your findings are real and worth noting. So in simple words, you should always acknowledge your own errors and biases. Okay, you should not just acknowledge, you should also own them. तभी एक हर, जैसे like I mentioned, हर पेपर में एक limitations का section होता है और उसमें हम यही बताते हैं कि भाई हमारे पास ये कमी थी, उसको हमने ऐसे ओवरकम किया, लेकिन अभी भी इसमें यहाँ पे कसर है. It's as simple as that. So these are my references and this is my